Good morning, students. Once again, we are here to discuss the first chapter of class 10, that is, first chapter life processes. Now, this is the second video of this chapter, and we will discuss from the topic nutrition. Okay, students, we all know and familiar with nutrition. What is nutrition? एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट गेट फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये हम लोग जानते हैं कि उसके अगल बगल से वो फूड लेते हैं, चाहे इफ इट इज रिमेन ए लाइफ फॉर लॉन्ग. फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड. द फूड और न्यूट्रिएंट्स इज a substance which an organism uses to get an energy source and provide raw material for the biosynthesis of food constituent. It is called nutrition. Once consumed, food passes through a series of biochemical changes and finally the part of the incorporated into the living material of the body. The तो स्टूडेंट्स, यही जो इनटेक ऑफ फूड है टुगेदर फॉलोड बाय द यूटिलाइजेशन, जो फूड हम लोग लेते हैं एक साथ अपने खाने के तौर पे, और जो फॉलोड होता है बहुत सारे प्रोसेसेस के द्वारा, एंड उसका यूटिलाइजेशन जो होता है, यूटिलाइजेशन होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है बॉडी के, तो ये टोटल एक कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू डिफरेंट पार्ट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और स्टूडेंट्स? एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी टेक. फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट्स, रेगुलेटिंग फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स. हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म get their food? So living organism, most of the living organism methods of procuring food or obtaining food by an organism called modes of nutrition. So there are two types of modes of nutrition. First, autotrophic nutrition, and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means students, auto means auto, self, and trophic means nutrition. Organism who prepare their food self nourishing, they make within their tissue all types of food they need. They use the raw material and energy from the environment. Autotrophs manufacture their own food. The autotrophs are divided into two categories on the basis of what they manufacture their food. Photosynthesis, it means plant autotrophic, and एक है chemosynthesis, it means chemotrophic. Chemoautotropic. All green plants, certain protists and photosynthetic bacteria source the photosynthesis are called photoautotrophs. They contain a green pigment called chlorophyll, and they are able to synthesize the food from the simple raw material, that is CO2 and H2O, in the presence of sunlight. This process is also called photosynthesis. And in chemosynthesis, energy which is stored in the food is obtained from the some chemical सोर्स इंस्टीड ऑफ लाइट के बजाय वो किसी केमिकल सोर्स से स्टोर्ड फूड को यूज करते हैं. दे रिक्वायर ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, दैट इज हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैक्यूलस एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज नाइट्रोबैक्टर. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया गेट देयर हाइड्रोजन फ्रॉम H2S instead of water. So CO2 plus 2H2S in presence of light or bacteriochlorophyll, CH2O plus H2O plus 2S. Such organisms are called chemoautotrophs. Now, basically or broadly, the first autotrophic is completed, in which basically photosynthesis and chemosynthesis, two types of nutrition. And in heterotrophic means organism in heterotrophic mode of nutrition, an organism cannot make their own food. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग बॉडी है वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, वो डिराइव करता है अपना फूड या डायरेक्टली ऑन प्लांट और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट के ऊपर, और सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? The green plants से autotrophic mode of nutrition करते हैं. The autotrophic bacteria also obtain
their food by autotrophic nutrition. Green plants synthesize their own food by the process of photosynthesis. This is the single and the most important physio-biochemical process of the world. The existence of the life on the earth depends on it. Photosynthesis is the only process by which green plants trap the solar energy and convert it chemically into their food, and this process is called photosynthesis. And the carbon dioxide which are not used immediately are stored in the form of starch in plants. In human beings, food is stored in the form of glycogen. Now here is the chloroplast, the site of photosynthesis. लीव्स के वह साइट जहाँ पर क्लोरोफिल रहता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं. क्लोरोप्लास्ट मीन्स grass green and plastomolded are green plastids which help in the synthesis of organic food. The chloroplasts are distributed uniformly in the cytoplasm of plant cell. They are well defined in all the green leaf plants. Electron microscopic structure क्या है? Electron microscopic structure है reveals that chloroplast is covered by a double membranous structure called chloroplast envelope. Each membrane of envelope is a unit membrane like plasma membrane. Proteinaceous matrix in the chloroplast is called matrix or stomata. Stroma. A massive membrane system of lamelia and thylakoids which run parallel to each other. ये जो पैरेलल चलते हैं स्टोमा में, तो किसी भी हायर प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट टू टाइप्स के होते हैं. एक थाइलाकोइड्स जो लार्ज होते हैं एंड स्मॉल. द लार्ज वन आर नोन एज स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर. एंड एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि छोटा होता है एंड डिस्क शेप्ड थाइलाकोइड which are closely packed at a place to form grana, hence called grana thylakoid. The grana thylakoids fuse with the large stroma thylakoids in the region of grana. Here the photosynthesis pigment. In photosynthesis pigment, the pigment involved the process of photosynthesis are known as photosynthetic pigment. Pigment like chlorophylls, carotenoids and xanthophylls, anthocyanin, phycobilins are may be found in the plant cells. And here chlorophylls, the green pigment in the chloroplast are 7 types, that is chlorophyll A, B, C, D, E, bacteriochlorophyll and bacteriovridine. The green color of the plant is due to the presence of chlorophyll in them. Chlorophyll traps solar energy and converts it into chemical energy during photosynthesis. Carotenoids क्या है स्टूडेंट्स? Carotenoids are lipids and can be classified into two groups, keratins and xanthophylls. Carotens are organ red in the color and they are isolated from carrot. Xanthophylls are yellow in color. Carotenoids absorb light energy and transfer it into chlorophyll and thus ये एक तरह से एसेसरी पिगमेंट हो जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स. ना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इट मीन्स हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस बगैर सोलर एनर्जी के नहीं होगा. तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स of the plant like leaves. In a few cases the stem in ginger and other plants photosynthesis, the leaf contains cell which contain the green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is the present inside. chlorophyll कहाँ मौजूद रहता है? certain plants के pigment में जिसको हम लोग chloroplast भी बोल सकते हैं. On lower surface of the leaf small pores stomata are present. From these openings carbon dioxide diffuses into the leaf. Chloroplast obtaining cell are present in more quantity on upper side, thus they are able to get more sunlight. Vein in leaf bring water for photosynthesis. जो veins होते हैं leaves में वो water carry करते हैं photosynthesis के लिए, and oxygen is the byproduct released at the end of the complete process of photosynthesis, and oxygen is released through the stomata into the atmosphere. So this is the end of this second lecture students. We will now
see the third lecture. In the third lecture, we will discuss about the materials or raw materials which were used during the photosynthesis. So that's all for today, student. Thank you. Have a nice day.